आई थिंक ये मेरा हैट्रिक है आपके साथ। आई थिंक मस्तीज़ादे, राख, और अब हम वी आर चैटिंग अगेन आफ्टर सत्यमेव जयते, बिफोर मर जावा। नहीं तो फिर बहुत कम हमने बात करी, हमें बहुत और बात करनी चाहिए। और करनी चाहिए। 56 इंच का जिगरा जो है वो जॉन इब्राहिम का सच में है कि उन्होंने मिलाप जवेरी पे भरोसा किया है। नो आई थिंक मजाक में एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्यमेव जयते की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि इट वाज डायरेक्टर प्रूफ। कोई भी डायरेक्ट कर लेता है पिक्चर, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी। Hi, this is Milap Zaveri. Please do watch Bollywood Hungama and subscribe and hit the bell icon. We have with us blockbuster director Milap Zaveri, and he's just had one blockbuster and मर जावा the way the feel is, नाम को ही देख के अंदाजा होता है कि that ये भी बहुत ही चलने वाली है पिक्चर। Pleasure having you back first of all on Bollywood Hungama, Milap. Great to be back, Faridoon. I love always chatting with you. Same है। Yeah, I think ये मेरा हैट्रिक है आपके साथ। I think मस्तीज़ादे, राख, और अब हम we are chatting again after सत्यमेव जयते, बिफोर मर जावा। नहीं तो फिर बहुत कम हमने बात करी, हमें बहुत और बात करनी चाहिए। और करनी चाहिए। Alright, so how's the feeling like? Because you know, anyone who knows you knows the fact that how important this film was, Satyameva Jayate, for you, and especially because of the fact that you consciously just went for a makeover of sorts as far as yourself is concerned after Mastizade, and then you did a short film in Rakh, and then Satyameva Jayate. How crucial was it for you? It was, I think, do or die, Faridoon. It was very important for me, like you rightly said. मस्तीज़ादे नहीं चली थी, उसके बाद बहुत टाइम के लिए थिंग्स वर डिफ़िकल्ट, काम नहीं था, कोई मिल नहीं रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई मैसेज के जवाब नहीं दे रहा था। मुझे काम क्रिएट करना पड़ा खुद के लिए। जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म राख बनाई। आई वॉज वेरी लकी दैट वीर दास, रिचा, शाद रंधावा, उन्होंने मतलब मेरे साथ वो शॉर्ट फिल्म की, और उस शॉर्ट फिल्म से मैंने कोशिश की दिखाने की कि मैं सिर्फ कॉमेडी डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने फिल्में लिखी है, जैसे कांटे हो या शूट ऑर्डर वडाला, एक विलन हो, मुसाफिर हो, तो मैं इस किस्म की फिल्म डायरेक्ट भी कर सकता हूँ जिसमें ड्रामा हो, एक्शन हो, डायलॉग बाजी हो, इमोशन हो। और सत्यमेव जयते, मतलब आई मस्ट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू फ्यू पीपल। देयर वाज मोनिशा अडवाणी, निखिल सिस्टर, निखिल, मधु, दे हैड फेथ इन द स्क्रिप्ट। जॉन इब्राहिम, मतलब मतलब आई ऑलवेज से 56 इंच का जिगरा जो है वो जॉन इब्राहिम का सच में है कि उन्होंने मिलाप जवेरी पे भरोसा किया और कहा कि मैं तेरे साथ फिल्म करता हूँ। रोहित धवन, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि तू जॉन से बात कर, जॉन से मिल, तो क्या अगर तेरी फिल्म चली नहीं है। जॉन ऐसा एक्टर है जो वो देखेगा नहीं कि पास्ट क्या चली नहीं चली, वो स्क्रिप्ट और तुझ पे भरोसा रखेगा। So there were a lot of people, who had the courage to, give Milap Zaveri a chance के, मैं हाथ ऊपर करके कह सकूँ कि यार, मतलब don't write me off yet, give me one chance. I'll do my best to, make a film that people will be proud of, that hopefully audiences will enjoy. There was a point of time when people were not lifting the phone, and now you're being gifted Mercedes. Yeah, I mean, I must thank Bhushan Kumar sir, निखिल, मोनिशा, मधु। आई मीन इट वॉज सो ओवरवेलमिंग। हमने एक बहुत छोटा सा एक गेट टुगेदर लंच रखा था निखिल के घर पे। सक्सेस पार्टी नहीं थी, बट जस्ट आपस में दैट क्रू सेलिब्रेटिंग, बिकॉज उस टाइम केरला फ्लड्स वर गोइंग ऑन एंड जॉन डिडंट वांट टू सेलिब्रेट द सक्सेस if it was not on good taste. So we just had a little lunch at Nikhil's house, and that's when Monisha, Bhushan ji, Nikhil, Madhu, they surprised me with the car, the new Mercedes. And it was a big, I was very emotional, and I couldn't believe it. And I'm like, I felt very touched, because it was always a dream of mine to, own my own Mercedes. And इसके पहले मेरे पास एक second hand Mercedes थी, but this was like a brand new car. And I felt really happy. I felt, that my journey had reached such a stage that I could, travel ahead in my own car, that my producers had gifted me, because they were so happy with the success of the film. Right. In fact, John, for that matter, we did an interview with him on the day Parmanu released, and in that interview itself, he said that it's one of the finest scripts that he has written in the recent times, and he's very, very confident of the film. Even I was quite surprised with his level of confidence, because you see, the fact is that ये industry तो इतनी बेरहम है कि ये सिर्फ कामयाबी को ख़त्म चूमती है, and the fact is that you had a Mastizade before that, and
But the fact is that someone is believing in this manner, and it definitely just shook me as well. नहीं, जॉन ने आई थिंक मजाक में एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्यमेव जयते की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि इट वाज डायरेक्टर प्रूफ. कोई भी डायरेक्ट कर लेता है पिक्चर, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी. सो एज आई सेड, नो, ही हैड लॉट ऑफ फेथ इन द स्क्रिप्ट, फरीदून. एंड आई मस्ट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू निखिल, यू नो, अडवाणी, बिकॉज क्या निखिल इज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ. और एक डायरेक्टर के लिए जब वो प्रोड्यूसर बनता है, उसकी एक सेंसिबिलिटी होती है. मेरी अलग सेंसिबिलिटी थी. एमए जो कंपनी है निखिल की, उन्होंने कभी सत्यमेव जयते जैसी एक हार्डकोर, यू नो, मासी फिल्म कभी नहीं बनाई थी. तो कभी कभी निखिल जब यू नो सेट पे आता था या रशेस देखता था, वो कहता था, मिलाप, दिस इज वेरी कमर्शियल, इट्स वेरी फ्रंट फुट, आर यू श्योर, यू नो. एंड जॉन ऑल्सो फर्स्ट इनिशियली वुड आस्क मी, आर यू श्योर मिलाप कि यू वांट टू गो सो कमर्शियल. आई सेड, जॉन यार, वी स्टॉप मेकिंग फिल्म्स फॉर द मास ऑफ इंडिया. वी आर सो worried about the plexes, or you know, the city audience, or the few critics who like intellectual films, कि हम डर गए, हम मास के लिए फिल्म बनाना भूल गए. let's do this, let's make this for that mass, you know. And to their credit, now Faridoon, they let me, even though they were little worried, you know, skeptical also, because I had a failure behind me also. They were skeptical, but as we started shooting and the rushes started coming, you know, they started getting confidence, you know. जो वो नमाज वाला सीन especially जो था, जब माँ नमाज पढ़ती है, and Nikhil saw that, he said, this is 2018. I said, Nikhil, yeah, but the emotion is, human being का emotion वही होता है, कोई भी साल कुछ भी हो. And he had faith, he believed me, said ठीक है, okay. I remember जब थिएटर में हम फिल्म देख रहे थे, हम गेडी गैलेक्सी गए थे, और जो तालियां पड़ी, you know, वो सीक्वेंस पे, आई थिंक वो 12 मिनट का सीक्वेंस है, 12 मिनट लगातार तालियां पड़ी. And he looked at me, and he said, yeah, you were right, you know, emotion is emotion. So I guess I was lucky. I met the right people who trusted me. Okay, so basically I think their apprehension was that it's like an 70s, 80s revenge drama. Yeah. I mean, see, so what we did, the way we shot it, the style, we made that today's, you know, the way the film looked, the way the action was designed. We tried to think, do action जो कभी पहले किसी फिल्म में आपने देखा ना हो. जैसे आपने कभी किसी फिल्म में देखा नहीं कि एक हीरो अपने ताकत के साथ टायर फाड़ देता है, या दरवाज़ा अपने हाथों से उखाड़ देता है. सो वी प्लेड अ लॉट विद दिस काइंड ऑफ स्टाइल एंड ड्रामा विद इमोशन. बट या द फिल्म वॉज अ हार्क बैक टू जो मनमोहन देसाई जी बनाते थे, जो रोहित शेट्टी, यू नो, जो बहुत इतनी बेहतरीन फिल्में, जो सिंघम हो, या जब वो बनाते हैं, वो कन्विक्शन के साथ ऐसी फिल्में बनाते हैं. संजय गुप्ता, who I worked a lot with, when he made a Kaante or a Shootout at Vadala, there was a certain drama and, you know, एक filminess to it. I'm a very big fan, sir, of Mukul Anand ji, the late Mukul Anand ji, Rajkumar Santoshi. You know, they made films, you know, with drama, with heart. Mukul Anand sir, तो style तो मतलब was another level. In fact, in my climax of Satyameva Jayate, my initial, I wanted to pay a homage to the Agneepath climax, where, you know, Amit ji runs to the street of fire, but I didn't have that enough time and to pull it off. So then I scaled my vision down, and I just had the wall of fire through which, you know, John walks through the fire. Because somewhere, sir, I also was walking through fire only. मेरे लिए भी एक अग्नि परीक्षा थी ये picture, you know. Someone, my wife Gauri, when she saw the film, she said, "There's so much fire, there's so much anger in this film. There, you know, there's so much. It's so dark." And I said, "Yeah," because I said I'm angry not with the world but with, you know, myself. कि how did I, you know, let people down earlier, and how have I not lived up to what my potential should be. So वो फायर, वो फिल्म में हर जगह इसलिए फायर था. सर लोग जल रहे थे, लोग एक दूसरे को चला रहे थे उस फिल्म के अंदर. Hi, this is Milap Zaveri. Please do watch Bollywood Hungama and subscribe and hit the bell icon.